Good morning to everyone, student. Here we are going to see exercise 11.2 question number 5. In the previous video, I think we had completed question number 1 to 4. So moving toward the question number 5 from exercise 11.2. What the question says. Here in this question number 5, it is said that PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is equals to 12 cm and QM is equals to 7.6 cm, find the area of a parallelogram PQRS. And in the second part, it is asked to find the height QN if PS is equals to 8 cm. That means all together you have to find the area of the parallelogram as well as the height, as well as if the base is 8 cm, you have to find the value of Qn, where Qn will be the height of the parallelogram. Okay, so look the figure over here. Here in this question, a figure is 11.23 in your book. Figure is being given and it is said that S to R it is 12 cm given. So this will be SR will act as a base. For SR base, QM will act as a height, that is 7.6. Okay. So when we are having the value of base and the height, we can easily find the area of the parallelogram. So putting the formula of area of the parallelogram PQRS, area of the parallelogram PQRS, base into height, where base is given SR and height is given QM in the figure itself, isn't it? So base is 12 cm and QM, that is height, is 7.6 cm. When 12 cm will be multiplied with 7.6 cm, you will get the area of the parallelogram PQRS as 91.2 cm square. Okay. जब आपका बेस और हाइट मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस है उसका एरिया मिलेगा. किसका एरिया मिलेगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS. उस एरिया कैसे निकला? जब उसका बेस का वैल्यू SR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QM की वैल्यू जो कि हाइट है 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है. तो बेस और हाइट की वैल्यू होने के कारण हमने एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया फॉर्मूले से. Okay, so that is area of a parallelogram will be equals to 91.2 centimeter square. Clear up to here? Now in the same question it is asked that you have to find the value of QN. QN that is this. ये QN एक हाइट दिख रहा है फिगर में, इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है. कब फाइंड करनी है? जब आपका वैल्यू PS की वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है. The value of PS is a base, okay, and QN value you have to find. So height value you have to find when base is given. So जब हमारे पास area of a parallelogram का value 91.2 centimeter square मिल गया है, तो हम easily उसका height find out कर सकते हैं. So area of a parallelogram is equals to base into height, where base is QN, which value is being given. Base here PS is a base, not QN. PS into QN. So base value is given as 8 and height is, that is QN, we have to find out. So this 91.2 centimeter square is the area of the parallelogram, which will be divided by 8. The base is 8, so it will get divided. So we will get the answer of height of a parallelogram is 11.4 centimeter as an height of the parallelogram. ठीक है. अगर हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की वैल्यू है तो हम इजीली बेस या फिर हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हमने हाइट Q का वैल्यू या QN की वैल्यू हाइट क्या फाइंड आउट किया? 11.4 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया. देन मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6, हियर इट इज सेड दैट DL and PM आर द हाइट ऑन द साइड AB and AD respectively of a parallelogram. DL और BM हाइट है किस साइड का? AB साइड का और AD साइड रिस्पेक्टिवली. पैरेललोग्राम का नाम है ABCD. Okay, if the area of the parallelogram, since here in this question area of the parallelogram is given, we have to find the height. ठीक है. हाइट कब फाइंड करना है? जब उसका बेस AB जो है वो 35 सेंटीमीटर होगा, और हाइट कब फाइंड करना है? जब AD बेस उसका 49 सेंटीमीटर होगा.
So once I will draw the figure, that it will be easy for you to be understandable. So here I am going to draw the figure. Look at just. So this is a parallelogram with the name as A, B, C, D. Its area is given as, area of the parallelogram is given as how much? 1417 centimeters square. This much is the area given. Okay. Then after we said that the value of AB is given as 35 centimeter. When the value of AB is given 35 centimeter, you have to find the value of DL. जब आपका बेस का वैल्यू AB का वैल्यू जब आपको 35 सेंटीमीटर दिया रहेगा, 35 सेंटीमीटर दिया रहेगा, तब आपको DL हाइट फाइंड करना है. ठीक है. सिमिलरली जब आपको वैल्यू AD का बेस का वैल्यू आपको कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब आपको हाइट BM फाइंड करना है. ये वाला हाइट फाइंड करना है. ओके. सो इन ऑर्डर you have to find the value of DL as a height and BM as a height. So ये दोनों की हाइट फाइंड करना है जब दोनों का बेस अलग अलग क्वेश्चन में दिया हुआ है. बट दोनों के लिए जो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा वो सेम होगा. ठीक है. सो DL is the height on AB side and BM is the height on AD side of a parallelogram ABCD. Then parallelogram, area of parallelogram फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम की वैल्यू दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इनटू DL. नाउ AB की वैल्यू ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि वो बेस है, तो उसके बेस की वैल्यू 35 सेंटीमीटर होगा. एरिया जो है 1470 होगा. आपको उसका हाइट मतलब DL फाइंड आउट करना है. तो ये 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड होगा. 35 के टेबल में 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 42 टाइम्स आता है, तो वो कैंसिल हो गया. सो हमको यहाँ पर हाइट मिल गया कितना? 32 सेंटीमीटर. ठीक है. 32 सेंटीमीटर. सिमिलरली जब सेकेंड वाला हमको फाइंड करना है, सेम एरिया रहेगा. जब उसका बेस 49 रहेगा, बेस मतलब AD into BM. तो AD हमारे पास 49 है क्वेश्चन में, which will be divided with the area of the parallelogram. Okay. Then when you are going to divide the value of BM, which will act as a height, we will get the required answer as 30 centimeter. Clear? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि दोनों पैरेललोग्राम के लिए एक फिगर में दो पैरेललोग्राम है, दो बेस है, दो हाइट है. तो उसी दो बेस की वैल्यू दिया गया है और इंडिविजुअल हाइट दोनों रेस्पेक्टिवली बेस के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है. बट दोनों का पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो सेम होगा. ठीक है. समझ आया? सो हियर वी हैड कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन 6. मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, हियर इट इज सेड दैट triangle ABC is right angled at A. AD is perpendicular to BC. If AB is equals to 5 cm, BC is equals to 13 cm, AC is equals to 12 cm, find the area of the triangle ABC. Also find the length of AD. So dear student, as we had find the area of a parallelogram, finding their base if height is given, or finding the height if their base is given. Okay. So with the same we are going to find question number 7, height. Area of the triangle. So using the formula for the area of the triangle, here we have to find the area of the triangle as well as we have to find the length of the AD. Okay. Now look how to find out. So dear student, look after. Here little bit changes will be there in the formula. As in this question, ABC is a right angle triangle at A. Okay. एक ये right angle triangle है कहाँ पर? A पे. एक है वो 90 डिग्री. ठीक है. और उसके बाद ये बोला गया कि AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. देन AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब हमको फाइंड क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल ABC का, और साथ में एरिया फाइंड करने के साथ साथ हमको इसका हाइट AD की हाइट फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है. अब जब तक इसका एरिया का वैल्यू मालूम नहीं रहेगा, हाइट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, है ना? सो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल. Area of a triangle is equals to perimeter of a triangle.
दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेम होगा। तो सम ऑफ ऑल साइड निकालेंगे, ए बी दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है और सी ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा एरिया है। सो यहाँ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, दैट्स व्हाई द एरिया इज कमिंग 30 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट द एरिया इज 30 सेंटीमीटर, वी कैन इजीली फाइंड आउट what? Find out the height. So area of a triangle is equals to half into base into height, where area is 30 centimeter square we had find it out, half into base यहाँ पर क्या है, base है BC and height जो है हमारा AB है। So base हमारे पास क्या है, ये जो 1/2 as it is रहेगा into BC जो है 13 सेंटीमीटर है, AD हमको फाइंड करना है, we have to find the value of AD. Okay, now 30 centimeter square is equals to 1/2 into 13 centimeter into AD. AD is the height whose value we have to find out. So 30 centimeter square, this 2 will be cross multiplied with 30 so that it will become how much? It will become 60 centimeter square. Now 13 centimeter will come at the denominator of 60 in order to find the height AD. AD क्या है, height. So here centimeter will get cancelled. 60 upon 13 centimeter is the value of AD, which will act as a height. Clear to everyone? So this is the solution. So dear student, here question number 7 is completed. Hope you people understood. Now moving toward the question number 8 of this exercise, it is said that triangle ABC is isosceles with AB is equals to AC is equals to 7.5 centimeter. As you know that isosceles triangles means any two sides are equal. So the two sides which are equal in the isosceles triangle, then measurement is given as 7.5 centimeter and base is given as BC. BC will be base. So its base is given as 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Then we have to find the area of the triangle ABC. What will be the height from C to AB, that is CE. So similarly you have to find. Okay, so see how to find this. Look question number 8. So here in this triangle ABC is an isosceles triangle in which two sides are equal and the two sides which are equal to each other is AB and AC, whose measurement is given 7.5. Okay, BC will act as a base whose measurement is given as 6 centimeter. So here we are going to draw the diagram. This is the triangle ABC with AD as the height. Okay, BC, how much it is? BC is given 6 centimeter. In the question itself, AB and AC is given as 7.5 centimeter, 7.5 centimeter. Okay, also we have to find out the value of AE, height find out the value. Okay, so सबसे पहले what we are going to find? We are going to find the area of a triangle. So what is the area of a triangle is? Half into base into height, isn't it? So half into base will be 7.5. BC will be act as a base, so it will be 6. And height we will consider as, so height we will consider, base is given height 6 centimeter, 9 centimeter, BC 9 centimeter. So 3 lines are how much it will be? 27 centimeters square. So this is the area of a triangle, 27 centimeters square. Now here again it is asked to find the height. So height will be, when area is 27, so height will be
area will be you get divided by the number 7.5. Okay, so that you will get the answer 7.2 centimeter. So here we had completed the explanation of question number 8 and this exercise is over. Hope you people understood the solutions. So for today everyone, thank you everyone. Here we are going to end our video.